Welcome to the channel back again. We are back with one another video. This video is not going to be a review or a recap. This is going to be a recommendation video in which I'll be recommending you top 8 movies which are the gems of Indian cinema. Those movies which defines the industry. Movies which are not popular in the mainstream. इसमें से बहुत ऐसी मूवीज़ हो सकती है जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो. लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड का डाउनफॉल चल रहा है, इंडिया के अंदर मूवीज़ नहीं बन रही है. उसका रीज़न ये है कि आप लोग सिर्फ मेन स्ट्रीम में जो मूवीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हो. ज़रूर आप लोग ने पैन इंडिया मूवीज़ देखी होंगी, तमिल तेलुगु की, बट उसके अलावा भी ऐसे पार्ट्स हैं, रीजनल सिनेमाज है जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, बट दे आर एज अ सेड जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा. और मेरा सिंपल एक विज़न है और एक एम है इस वीडियो से कि आप लोग को इन मूवीज़ के बारे में पता चले, क्योंकि इन मूवीज़ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. सिनेमैटिक लेवल पे सिनेमा मेकिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में, इनसे अच्छा आपको और कोई नहीं सिखाएगा. सो इस वीडियो में हम इन्हीं मूवीज़ के बारे में बात करेंगे. विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द टॉप 8 मूवीज़ विच आर द जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा. Sunrise is dancing up on the rooftop bar. Don't really need to talk. I'm reading the silence. I think it's pretty. नंबर 8 पे मैंने रखा है हेलारो. ये एक गुजराती मूवी है. हेलारो इज़ अ पावरफुल रिब्यूक टू पेट्रियार्की. ये जो स्टोरी है ये औरतों के ऊपर बेस्ड है. This is a story which revolves around a group of women who live in Kutch, Gujarat, and they are subjected and oppressed with every form of deprivation imaginable. आप एक patriarchal society में जितना एक oppression आप imagine कर सकते हो वो सब इस मूवी में दिखाया गया है. Then Manjari, a newlywed educated bride, enters that village and takes bold steps toward the changing and small things. Aside from women's empowerment, this movie emphasizes on the needs to eliminate superstitious beliefs and hypocritical practices from our daily lives. I strictly suggest all of you guys, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, to go and check out this movie. This is one of the best movies about, this patriarchal society and women empowerment. This movie is freely available on MX Player. आप जाके ज़रूर देखिए इस मूवी को, you will really love it. કીધું તું ને પાક ફૂટી હોય કે સિંગડા જાતે કાપી નાખજે હું કાપીશ તો વધારે દુખાશે. On number 7, I have Didi. This is a Kannada film, okay? Didi is a beautiful story set in Karnataka town where the 101-year-old resident, affectionately known as Century Gowda, dies. This story then follows around the 3 generations of the Gowda family. First, we have Gadappa's son, तमन्ना's grandson and Abhi's great grandson. बात करें इस गड़प्पा की, so he is a free spirited person and he's uninterested in everyday pleasures. And Tamanna is recklessly determined to acquire Century Gowda's land. And Abhi, he is a young adult and he's more interested in pursuing a girl in typical Bollywood ways. This is a beautiful cinema which defines, comedy and humor in a really nice way, and this tells you how a story should be made, how a story should be portrayed. This won so many awards in regional space. उसको बहुत awards मिला, बहुत recognition मिला, और मैं इस मूवी को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग को भी इस मूवी के बारे में पता चले. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, बट टेक अ टाइम अपार्ट टू वॉच दिस ब्यूटिफुल कन्नड़ा फिल्म दीदी. ಪತ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಸೂಟ ಅಂತ ನಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಮ್ಮ. ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಹೋಗುದಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಆದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲಿ. On number 6, I have Aligarh. This is a Hindi movie. I guess आप लोगों ने इसके बारे में एटलीस्ट सुना होगा, देखा है क्या पता नहीं,
But Aligarh is a paradigm shifting film, and that only focuses on homophobia but also emphasizes the problem of loneliness. आई गेस इंडियन सिनेमा के अंदर होमोफोबिया के ऊपर बहुत कम मूवीज़ है और उसमें से एक है अलीगढ़. दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ डॉक्टर सिरस, अ मराठी प्रोफेसर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ड्यू टू हिज homosexuality, Dr. Siras finds himself in a plot devised by his colleagues. Siras's human identity is just reduced to the 3-letter word G-A-Y, gay. Fundamental human rights are violated solely because of his identity. Siras uses alcohol and Lata Mangeshkar's music to overcome his loneliness and feel like an average human again. सबसे बेस्ट मूवी इस बात की है, this has one of the greatest actors in Indian cinema, that is Manoj Bajpayee. Undoubtedly one of my favorites and most of the people, like he's the people's favorite. और जब उन्होंने ये रोल करा है, this movie has become a standout movie for the industry, and I suggest all of you to just take a time apart to watch this beautiful movie. Was it your lover? तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़ जाते हो? कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो. It's a beautiful world. क्या प्रोफेसर सिरस अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे? You have to fight it out, Mr. Siras. क्या करना होगा मुझे? कौन है? On number 5, I have Court. This is a Marathi multilingual film. Multilingual means ये अलग अलग languages में भी available है. Court revolves around the arrest and trial of elderly folk singer activist Narayan Kamble. This film is about the ineffective Indian legal system. A sewage cleaner's apparent suicide leads to the arrest of Dalit descendant Narayan. This film also, delves into the personal lives of the judge, public, prosecutor, and the activist lawyer. As the case drags on for months due to numerous excuses and delays, this tells you what is the ground reality of Indian legal system. I suggest all of those people who are interested in these courtroom dramas to check this out. On number 4, I have Village Rockstar. This is an Assami movie. Village Rockstar emphasizes the disparity between rural and urban India, where rural India bears the brunt of poverty, natural disasters, etc. Despite these challenges, Dhanu and her friends want to form a rock band. Dhanu wishes to own a guitar and asks her mother to purchase one, but the guitar cost is beyond their means. This film encourages us to keep dreaming in the face of adversity. I guess India में इतनी musical movies नहीं बनती है which tells us more about music, but this is one of them. Assami cinema के अंदर एक ऐसी movie बनाई गई है, so you guys should definitely check this out. On number 3, I have Tumbad. ये एक हिंदी मूवी है. I guess बहुत लोगों ने सुना होगा, but I don't think you guys might have seen it. But Tumbad is a mythological horror drama that dwells into the legend of the Hindu demon Hastar, the first son of the goddess of prosperity and a symbol of limitless greed. Tumbad is an unappreciated gem, a universal story presented with such grace that it sets the tone for a visual treat to the audience. The best thing about Tumbad is its realism. इसमें जो performance है by the actors and the cast is such an amazing cast which makes you in love with the movie, and I suggest all of the people who are interested in these mythological horror movies
टू चेक दिस आउट। ये काफ़ी ज़्यादा एक हॉरर वाला है, जिनको हॉरर पसंद है उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बाबा तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हंसता रह जाए। नाम लेने से भी आता है क्या? ऑन नंबर 2 आई हैव चूजन राक्षसन। इसका अब हिंदी में भी रीमेक बन चुका है। अक्षय कुमार ने इसका रीमेक बनाया था कठपुतली, विच वॉज टेक्निकली अ वेस्ट। इस लेगेसी को ख़राब कर दिया था इस मूवी ने प्रॉपरली। बट राक्षसन इज़ अ कॉलीवुड तमिल सिनेमा, बोथ ऑफ द लैंग्वेज वाला सिनेमा है। राक्षसन मेरे ओपिनियन में राक्षसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इंडियाज बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म्स। एन एस्पायरिंग डायरेक्टर who has written a film about a serial killer soon becomes a police sub-inspector tasked with apprehending a psychopath who is abducting and killing young girls from their schools. He begins carrying on with the lives of the characters he once created for his film in this cat and mouse chase, which captures the essence of this gruesome and unfeeling spine chiller. And I guess you should definitely check this out. This is a एज ऑफ अ सीट फिल्म। आप इसको मतलब आप स्क्रीन को छोड़ नहीं पाओगे, आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। दैट काइंड ऑफ फिल्म दिस इज। ஆனால் ஒன்று மட்டும் கன்ஃபார்ம், அவன் ரொம்ப பிளான்டாக இருக்கான். அதான் நமக்கு சவால். On number 1 I have chosen Ship of Theseus. This is a Hindi multilingual cinema. I am pretty sure आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा. But this film is based on a paradox. As the planks of Theseus' ship needs to be repaired, they were replaced piece by piece until no part of the original ship remained. Is it still the same ship then? The film delves into the identity, beauty, justice, and the death issues. The film consistently tells 3 tales, the 3 strangers, the 3 journeys. Existence, consequences, worth, value, and morals are all issues to consider, and one crossroad. This is undoubtedly one of the greatest movies of Indian cinema, which no one has heard of. So, मेरा यही फोकस है कि इस मूवी को थोड़ा और पॉपुलर बनाया जाए। I strictly suggest all of you guys अपना टाइम निकालो इस मूवी को देखने के लिए, द शिप ऑफ थीसिस। ये थे मेरे कुछ 8 रिकमेंडेशंस, और ऐसा नहीं है जो मैंने इसमें नंबरिंग करी है इट्स अबाउट द रैंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नंबरिंग है जिससे मैं मूवीज़ को नंबर कर सकूँ। बाकी जितनी भी 8 मूवीज़ है सारी मेरे लिए एक समान है, एक लेवल पर है। ऑल ऑफ देम आर जस्ट जेम्स एंड दीज अंडररेटेड अंडरडॉग्स मूवीज़ ऑफ द इंडियन सिनेमा। इसी के साथ वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, सो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो बाय लाइकिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस करके आप सारी नोटिफिकेशंस पा सकते हो मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो मैं एक फ़िल्म एंथुसियास्ट हूँ और मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता हूँ, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। I'm reading